एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ PKQ एंड ए में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 15 जो कि विजन IAS का है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले जो मैंने ऑलरेडी 14 वीडियो जो फुल लेंथ की कराई हुई है वो कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी करते रहिए अच्छे से। एंड मिनी टेस्ट जो था वो पॉलिटी एंड प्लस ज्योग्राफी का हो चुका है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि उसका जो इकोनॉमी एंड अदर सब्जेक्ट्स का जो मिनी टेस्ट बचा है उसको कंप्लीट करवाया जाए? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए ताकि उसको भी हम कंप्लीट करवा दें। एंड एक और चीज़ जो CSAT की है, CSAT की जो टेस्ट है विजन IAS की, उसको करवाना है या नहीं करवाना है ये आप हमें कमेंट में बताइए। अगर करवाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कि हाँ CSAT का भी टेस्ट करवा दीजिए मैम। ओके, सो ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल adult franchise. Okay, so first statement is the Nehru report of 1928 recommended giving voting rights to all men and women over the age of 25. Is it true? No, it's not a correct statement because ये age 21 था ना कि 25. Okay, so first statement is incorrect. Next is 61st amendment of the Indian Constitution lowered the voting age for the Lok Sabha and Legislative Assembly in Assembly election to 18. ओके, पहले कितना था 21 जिसको घटा के 18 किया गया था। ओके, किससे? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ओके, सो स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B is the correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the acts passed during the British rule in India, consider the following statements. First is the Charter Act 1813 opened up trade with India to all the British subjects. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is if we're talking about the another statement, second one, which is the Charter Act 1833 ended the East India Company monopoly on tea and trade with China. Yes, it's also correct statement. Okay, and अगर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 में क्या था, इसमें क्या क्या था? तो इंड मोनोपोली था, जिसमें कि इंड मोनोपोली तो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, बट जो था ट्रेड विथ चाइना एंड टी बाकी था, उसमें नहीं हटाया गया था। ओके, सो फर्स्ट ये था। एंड उसी में रिटेंशन ऑफ टेरिटोरीज एंड रिवेन्यूज ये भी है। एंड एक्सपेंशन ऑफ द पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कम्स अंडर द, ये भी हुआ था कब? चार्टर एक्ट 1813 के अंदर। एंड उसमें और क्या क्या हुआ था? सो प्रमोशन ऑफ लिटरेचर, लर्निंग एंड साइंस एंड परमिशन फॉर क्रिश्चियनरी मिशनरीज, उन लोग को भी अलाउ किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग। एंड अगर हम चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग बात करते तो इसमें इस टाइम में क्या क्या हुआ था? ट्रांजिशन टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जिसमें कि एंड ऑफ द कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग मोनोपोली ऑन टी एंड ट्रेड। ओके, ये 33 में हुआ था। एंड अगर हम बात करते हैं अनदर वन विच इज क्लोज द ट्रेड लिंक्स विथ चाइना ऑल्सो एंड फ्रीडम फॉर इंग्लिश सेटलमेंट एंड चेंज इन टेरिटोरियल ओवर ऑनरशिप, change in territorial ownership. Okay, so answer for this question is option number C. Both are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following leaders, which is Tarak Nath Das and Lala Hardayal, Kartar Singh Sarv and Ras Bihari Bose. How many of the above leaders were related to the Gadar movement? तो इसका हो जाएगा all of the above, क्योंकि सारे रिलेटेड है गदर मूवमेंट से। ओके, और ये गदर मूवमेंट हुआ कब था? तो हुआ था 1913 में। और कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। एंड यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज with reference to the advocate general consider the following statement. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है एडवोकेट जनरल से रिलेटेड? सो फर्स्ट इज the constitution does not specify
a fixed terms of his office, nor does it contain procedure on grounds of his removal. Yes, it's a correct statement. Next is he can be reappointed or appointed to the another government position after ceasing to hold office. Yes, it's also correct. Next is he should not accept and appoint as director in any company or corporation without the permission of the state government. Yes, it's also correct. So answer for this question is ऑप्शन नंबर सी, ऑल थ्री आर करेक्ट. ओके, और ये एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर करते हैं. ओके, किसी भी स्टेट के. So let's come to the another question, which is with reference to freedom struggle in India, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द खुदाई खिदमतगार. ओके, इसको कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब किया है? सो लेट मी चेक. स्टेटमेंट वन इज इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी ग्रुप focused on violent method against British India. Is it true? No, it's not a correct statement. Next, it was a non-violent movement in the northwest frontier province. Yes, option number B is the correct answer for this question. और खुदे खिदमतगार को और किस नाम से also known as servant of God और red shirts भी बोला जाता था. ओके, और ये किसके द्वारा लेड के? इट वॉज लेड बाय द अब्दुल गफार खान के द्वारा. ओके, सो स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ फ्रीडम फाइटर and founding president of the Congress Socialist Party. He was imprisoned multiple times during the independent struggle, actively involved in the peasant movement. He was also a scholar of Buddhism. After independence, he led the Socialist Party and later प्रज सोशलिस्ट पार्टी ऑल्सो. सो इसमें से कौन सा ये को डिस्क्राइब किया गया है? तो आचार्य नरेंद्र देव के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है. ओके, जो ऊपर में दिया हुआ. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इसमें डिफेंस के नाम है, डिफेंस इक्विपमेंट के नेम है एंड डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो क्या किस चीज़ से रिलेटेड. ओके, सो फर्स्ट इज लाइक डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. पुष्पक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है. नो, ये क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है. ओके, सो इनकरेक्टली मैच. अगर हम उग्रम की बात करते हैं तो असॉल्ट राफल. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. और अगर तपस की बात करते हैं तो वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको ड्रोन के नाम से बोलते हैं शॉर्टकट में. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं पुष्पक के बारे में, तो ये अभी DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है. ओके, DRDO के द्वारा. और इसकी फुल फॉर्म आपको हमें कमेंट में बताना है एंड ये कब इस्टेब्लिश हुआ था. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज it ended the system of dual government introduced by the Pitt's India Act 1784. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is the power of the company's court of the director were vested with the Viceroy of India. Is it true? Yes, no, it's not a correct statement because the power of the company's court director were vested with the किसके ये में है? तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. ओके, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. सो ये वॉइसरॉय के अंदर नहीं आएगा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अपोलो स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया. तो किस में हो जाएगा? वेस्टर्न हिमालयन रीजन में. ओके, और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के स्टेटस में है. ओके, और ये अभी कहाँ पे मिला है? तो अभी मिला है मनी महेश लेक चंबा में. और ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में. ओके, हिमाचल प्रदेश में. सो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, विच इज वेस्ट
Himalayan region. Okay, let's come to the next question, which is which of the following mechanism were employed by the Constitutional Assembly to ensure representation from all religion of India? Indirect election, promotion representation, and nomination. All of the above is our correct answer for this question. And if we are talking about the, so answer क्या हो जाएगा? All of the above. Option number D is the correct. Okay, and if we are talking about the another important things, M.N. Roy, considered as pioneer of the communist movement in India, was the first to propose a constituent assembly for India in कितना 1934 में किसने किया था? तो M.N. रॉय ने. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशियली इसको रिजेक्ट कर दिया था, डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हाउएवर अगस्त 1914, जिसमें वाइसराय जो लिनलिथगो थे, वो अगस्त ऑफर को प्रेजेंट किए थे. एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द, और ये प्रोविज़न को भी इंक्लूड किए थे कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद. ओके, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान मई 1946 को. एंड द कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया टू डिलिबरेट ऑन द ट्रांसफर ऑफ ब्रिटिश पावर टू द इंडियन लीडरशिप. ओके, so answer is option number D. All of the above is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statutory bodies in India. First is Central Vigilance Commission, Central Information Commission, and National Human Rights Commission, and Lokpal. In how many of the above given bodies involved in the leader of opposition in the appointment of its head? So all of the above. So answer for this question is all of the above are correct. Okay, and if we are talking about the leader of opposition, our largest opposition party having not less than 1/10 of the seats. ये कौन, अगर अपोजिशन में कोई पार्टी है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो वो लार्जेस्ट पार्टी हो और 1/10 सीट उसके पास हो. ओके, सो उसके अंदर क्या हो जाएगा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एंड लोकपाल, ये सारे उसमें आ जाएंगे. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज in the list of proportional representation, how does voters cast their vote? किसके लिए वोट करते हैं? they vote for individual candidate only? No, it's not a correct question. They vote for political parties. They rank candidate in order to their preference? No. They vote for both parties and individuals? No. So answer is option number B is the correct. वो political party के लिए वोट करते हैं. ओके, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए. ओके, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is mochos and bulbuli sometimes seen in the news is associated with किससे है? तो भोजपुरी ट्रेडिशनल एनिमल फाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इन असम. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और ये मोस्ट जो है वो किससे? बफेलो फाइट के लिए फेमस है. ओके, बफेलो फाइट के लिए. अगर बुलबुली की हम बात करते हैं तो वो बर्ड्स फाइट के लिए फेमस है. ओके, कहाँ पे? असम में. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर टी, ट्रेडिशनल एनिमल फाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इन असम. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज which of the following were specific points or issues on the Gandhi ji initiated the non-cooperation movement? So first is khilafat, injustice, Jallianwala Bagh strategy, and Swaraj. All of the above. Sorry, not all of the above. 1, 2, and 3. Option number B is the correct answer for this question. But if you are talking about the Rowlatt Act, it's not related to this one. और Rowlatt Act कब आया था? तो Rowlatt Act आया था 1919 में. एंड अगर हम बात करते हैं Rowlatt Act की, तो ये क्या करता था? अलाउ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया टू डिटेन प्रॉपर्टी विदाउट ट्रायल फॉर up to 2 years and aiming to curb revolutionary activities. And it was highly unpopular and led
to widespread unrest across India, and महात्मा गांधी strongly इसको अपोज किए थे. ओके, and denial the basic civil liberties and initiated protest against it. Okay, so first all of the above are correct. Let's come to the next question, which is which of the following immunities are available to the President and Governor General under Article 361 of the Indian Constitution. Okay, first is they will not be answerable to any court for the exercise and performance of the power and duties of his office. Yes, it's a correct statement. Next is no criminal proceeding can be instituted or continued against them. Yes, it's also correct statement. जब तक वो पावर में है ये नहीं हो सकता. एंड दे विल बी नो सिविल प्रोसीडिंग विच कैन बी carried against them for their acts. No, it's not a correct statement because इसमें हो सकता है, सिविल प्रोसीडिंग में हो सकता है, बट कितना दिन के नोटिस के बाद, इन्हें 2 मंथ का पहले नोटिस देना पड़ता है, देन ये प्रोसीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो आंसर इज for this question option number 1 and 2, which is option number A, is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is which of the following is not a recommendation of the सरकारिया कमीशन. सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन कौन सा नहीं है ये पूछा. ओके, सो फर्स्ट इज all residuary powers should be placed in the concurrent list. Formation of a permanent inter-state council, a fixed 5-year term of governor, the commissioner for linguistic minorities should be activated. So कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि इसमें ऑल रेसिडुअरी सब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर नहीं आता है. ओके, and statement second is correct. Second, third, B, C and D are correct. B, formation of permanent interstate, correct. Fixed 5-year term for governor, correct. The commissioner for linguistic minorities should be activated, it's also correct. Okay, and if we're talking about the सरकारिया कमीशन से रिगार्डिंग कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है 3-member कमीशन इन 1983 ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अंडर द चेयरमैनशिप किसका? RS सरकारिया. ओके, जिसमें कि जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट. द कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट ऑन October 1987 विथ 247 रिकमेंडेशन. कितना टोटल रिकमेंड करता है? 247 रिकमेंडेशन देता है. ओके, बट उसमें से 179 को एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी को रिजेक्ट किया जाता है. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन था? अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल शुड बी सेटअप अंडर आर्टिकल 263 and another one is 256 which is president rule 356 जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल की बात की जाती है. वेरी स्पेशली एट दैट टाइम इन एक्सट्रीम केसेस एज अ लास्ट रिजोर्ट व्हेन ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव फेल. बट अभी तो प्रेसिडेंट रूल बहुत फ्रीक्वेंटली लग जाता है, बट पहले सबने सोचा था कि ये बहुत रेयर में यूज होगा या फिर ना के बराबर यूज होगा. ओके, और अभी एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू है, वो कौन सा स्टेट है? कमेंट में बताइए. ओके, और अगर हम कुछ पूछते हैं क्वेश्चन तो उसका आंसर दिया कीजिए, इससे आप ही का रिवीजन होगा एंड इससे चीज़ें लंबी समय तक याद भी रहती है जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो. ओके, से एंड अनदर रिकमेंडेशन इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन एंड मोर सच सर्विसेज शुड बी क्रिएटेड. और इसमें और भी सर्विसेज क्रिएट करना. एंड अनदर वन इज रेसिडुअरी पावर of taxation should continue to remain with the parliament while the other residuary power should be placed in the concurrent list. Yes, and another one is when president without withhold his assent to the state bill, the reason should be communicated to the state government. And another one is zonal council and
Another one is the center should consult the state before making a law on subject of the concurrent list. And next one is procedure of consulting the chief minister in the important of the subject governor should be prescribed in the constitution itself. And 5 year not be governor term is a term of 5 year in the state should not be disrupted except for extremely compelling reason. And three language formula true spirit दिया गया था. And no autonomy in for radio and television but decentralization in their operations. And commissioner of linguistic minorities should be activated. ओके ये सारे रिकमेंडेशन दिया गया था सरकार या कमीशन के द्वारा. ओके सो आंसर इज ऑल ये ऑप्शन नंबर ए विच इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि यहाँ ऑल सारा कौन करेक्ट लिस्ट के थोड़ी अंदर आता है. ओके सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ consider the following statement. First is in 1944 significant segment of country's industrialists collaborated to formula to join proposal known as Bombay Plan. Yes, it's a correct statement. Next is Bombay Plan opposed planning and favored in unrestricted economy without a state intervention. Is it true? No, it's not a correct statement. So answer for this question is ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर जिसमें कि बोला गया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट. ओके सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके एंड अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट सेकेंड वाइट वॉज not correct because the Bombay Plan envisaged a central role for the state in economic development with the government taking the lead in investment and planning. It called for mixed economy with a balance between the public and private sector. Okay and इसमें और क्या था promotion education public health and housing and development on the infrastructure like power transport and communication. एंड अगर हम बात करते हैं हम एम विश्वेश्वरैया प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया का था. एंड जवाहरलाल नेहरू लेड द नेशनल प्लानिंग कमेटी इन 1938. ओके सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग acts led to the establishment of first law commission in India which is under Charter Act 1833. So first statement is correct. Next statement is next question is consider the following statements with reference to Indian Home Rule Society. First statement is it was founded by the Annie Besant to the promote Swaraj in British India. No, it's not a correct statement. Let me tell you why. फाउंडेड एनी बेसेंट के द्वारा नहीं किया गया था, श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था. ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज द मेंबर ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी assassinated India office bureaucrat Curzon Valley. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay. And अगर हम बात करते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी तो ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था तो लंदन में 1905 में. ओके बाय द श्याम कृष्ण वर्मा. और इसमें प्रमोट किया था सेल्फ रूल इन ब्रिटिश इंडिया. ओके और इसका गोल क्या था तो प्रमोटिंग होम रूल, spreading propaganda in UK, making Indian aware of freedom and national unity, supporting Indian students and promoting non-violent self-rule and passive resistance. Okay और इसमें ऑर्गेनाइज ऑल्सो फाउंड इंडिया हाउस इन लंदन जो कि सर्व करता था एज द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़. ओके और इसमें लीडर कौन थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल made use of the scholarship to send students abroad. एंड अगर हम बात करते सच है सावरकर एंड हरदयाल
became the member of Indian Home Rule Society, and Madan Lal Dhingra from his circle assassinated the Indian office bureaucrats Curzon Wellesley. Okay, so answer is option number B, which is only 2 is correct. Let's come to the next question, which is consider the following events. First is Simon Commission, second round table conference, bomb blast in the Assembly Hall of of Delhi, and Pune Pact. How many of the above happened during the tenure of Lord वाइसरी ऑफ लॉर्ड इरविन? इसके टेन्योर में कौन कौन सा चीज़ हुआ था? ओके, तो क्या क्या हुआ था? तो इसके अंदर आ जाएगा साइमन कमीशन इरविन के टाइम पे हुआ था। एंड अगर हम बात करते हैं बॉम्ब ब्लास्ट इन असेंबली, ये भी इरविन के टाइम पे हुआ था। एंड सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल एंड पूना पैक्ट, ये किसके टाइम पे हुआ था? तो ये विलिंगडन तभी वॉइस रहे थे। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ ओनली 2 इज़ करेक्ट। एंड अगर हम बात करते हैं इरविन के टाइम पे क्या क्या हुआ था, इनका टेन्योर कितना था? तो 1926 to 31 था। और इस टाइम साइमन कमीशन आया था जो कि 1928 में। एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लखनऊ 1928। एंड हार्डकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन भी इसी टाइम इन्हीं के टेन्योर में इस्टेब्लिश हुआ था 1927 में। एंड मर्डर ऑफ साउंडरस, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट इन द असेंबली हॉल ऑफ दिल्ली 1929। फिर लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस एंड डेथ ऑफ जतिन दास आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड हंगर स्ट्राइक इन 1929। एंड बॉम्ब एक्सीडेंट इन ट्रेन इन दिल्ली 1929, इन्हीं के टेन्योर में हुआ था। एंड फिर टॉकिंग अबाउट लाहौर सेशन भी इसी के टाइम पे हुआ था 1929। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, दांडी मार्च 1930, गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड दीपावली डिक्लेरेशन by Lord Irwin 1929, and boycott of the first round table conference which happened in 1913, and Gandhi Irwin Pact 31, suspension of the civil disobedience movement। ओके, ये सारा जो इरविन के टेन्योर पे हुआ था। एंड अगर हम बात करते हैं लॉर्ड विलिंगडन, जिनका टेन्योर था 1931 to 36। ओके, और इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था? तो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो कि फेल हो गया था बिकॉज रिजम्पशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देन हुआ था कम्युनल अवार्ड 1932, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट वर सेटअप एंड फास्ट अंटो दैट बाय द गांधी जी, कहाँ पे? यरवाड़ा जेल में, जो कि पूना पैक्ट उसके बाद साइन हुआ था 1932 में। एंड ये भी इसी के टेन्योर में था। देन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, लॉन्च इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस 1933, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विलिंगडन के टाइम पे ही हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण 1934, एंड बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1935। ये सारा लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे हुआ था, जो कि वाइसरॉय थे एट दैट टाइम। ओके, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is with reference to the National Counter Terrorism Center, consider the following statement. First is it is a federal anti-terror organization of India. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is it is formed under the provision of the UAPA 1967 Unlawful Activity Prevention Act. Yes, it's also correct. Next is NCTC, which is National Counter Terrorism Center, is part of the Research and Analysis Wing, which is RAW, which is controlled by the Home Minister. Is it true? No. which नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ये किसके कंट्रोल में? कंट्रोल बाय द होम मिनिस्ट्री। बट अगर हम रॉ की बात करते हैं तो वो पीएमओ ऑफिस में आता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस में। ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज with reference to the modern Indian history,
Which of the following statement is correct regarding the day of deliverance? First is it marked the final formal acceptance of the Lahore Session resolution by the British government in 1914. No, it's not a correct answer. It was observed as the day of mourning by the Muslim League? No, it's not correct. It's a celebrated formation of the coalition government. Congress Muslim League 9. No, incorrect. Answer is option number D. It was observed to celebrate the resignation of all members of the Congress party from provincial and central office. Okay, so option number D is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is with reference to which of the following statements, which of the following are the elements of the basic structure of the constitution? ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन सा है? फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट, नहीं फंडामेंटल राइट नहीं होगा। और अगर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं आएगा उसके अंदर। और अगर हम एक चीज़ हमें पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर इसके अंदर नहीं आता है तो आंसर मेरा मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। अगर वन गलत है तो सारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। और आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विदाउट आपको ये पता, आप इसके बारे में कंफर्म हो या नहीं हो, बस एक स्टेटमेंट पता हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, बट वन इज नहीं। ओके, एंड अगर इसकी हम लिस्ट की बात करते हैं तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन सा है उसके अंदर। और अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये किस केस के थ्रू आया था? केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ये लाया था। एंड उस टाइम बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। ओके, एंड अगर हम देखते हैं ये कौन सा आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, उसके अंदर भी ये अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता बेसिक स्ट्रक्चर का। एंड मीन्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रीज एनी फीचर ऑफ द फॉर्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं इसमें कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है और कौन सा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट इज येट डिफाइंड और क्लैरिफाई कॉन्स्टिट्यूएंट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेरियस जजमेंट। ओके, और ये हर एक जजमेंट के अकॉर्डिंग उस टाइम देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है और कौन सा नहीं। एंड अभी तक वेरियस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आए हैं जिसको मेंशन किया गया अभी तक में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो कौन कौन सा है? फर्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स between legislature and executive and the judiciary, and sovereign democratic and republic nature of the Indian polity, secular character of the constitution and federal character of the constitution, and unity and integrity of the nation, welfare state, socio-economic justice, judicial review, freedom and dignity of the individual, parliamentary system, rule of law, and another one is harmony and balance between fundamental right and DPSP, and principle of equality, free and fair election, independence of judiciary, and limited powers of the parliament to amend the constitution, and effective access to justify principles or essence underline fundamental rights and power of the Supreme Court under Article 32, 160, 136, 141 and 142, and power of the High Court under the Article 226 and 227. ओके, ये सारे अभी तक क्लियर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के आते हैं के अंदर आता है। और इसे आप आर्टिकल 368 के अंदर भी है के अकॉर्डिंग भी आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। सो आंसर इज option number A. Let's come to the next question, which is consider the following statements. Which of the following above personality were related to the Communist Party of India? First is A.K. Gopalan, S.A. Dang, and E.M.S.
Nambodripad and the Ajay Ghosh. So answer for this question is all of the above, which is option number D is the correct answer for this question. और ये सारे रिलेटेड हैं ओके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ओके एंड अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसमें और कौन कौन सा आ जाएगा तो एक हो जाएंगे और हो जाएंगे एम रॉय ओके एम रॉय एंड सुरव एस रेड्डी एंड और क्या कौन हो जाएंगे तो एस रेड्डी एंड गुरुदास दास गुप्ता ये भी इसके अंदर आ जाएंगे ओके सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सो इसमें हाउ मेनी ऑफ द अबव not included in the oath taken by the Indian president okay so first is to uphold the sovereignty and integrity of India no it's not a correct statement to bear true faith and allegiance to the constitution no it's also not correct next is to devote to the service and well-being people of the people and to preserve protect and defend the constitution okay so 3 and 4 is the correct so answer for this question is option number B only 2 is correct okay and if we're talking about the exact ओथ जो कि प्रेसिडेंट लेते हैं और वो कौन से आर्टिकल के अंदर है तो आर्टिकल 60 के अंदर ओके 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट्स ओथ ओके और दिलाता कौन है ओथ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं एंड अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओथ दिलाते हैं किसको प्रेसिडेंट को और उसमें ओथ कैसे क्या है फुल ओथ की अगर हम बात करें तो आई जिसमें फिर नेम बोला जाता है डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलेनली अफर्म दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल टू बी द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी preserve protect and defend the constitution and the law and that I will devote myself to service and well-being of the people of India ये पूरा प्लेज है जो कि ओथ लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा से ओके सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज़ ओनली 2 and 3 विच इज़ 3 and 4 करेक्ट था ओके बाकी लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग in how many of the above given parties organization extended support in the release of the Indian National Army prisoners okay Indian National Army prisoners से कौन कौन से related है तो फर्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी हिंदू महासभा सिख लीग एंड यूनियनिस्ट सो ऑल ऑफ द above answer is option number D all of the above are correct answer for this question okay सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एंड अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं INA इन द प्रिजनर्स ट्रायल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड द इंडियन नेशनल आर्मी फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ किसके लीडरशिप कौन कर रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस एट दैट टाइम ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ consider the following statements regarding the cabinet okay cabinets related question how many of the above statement is correct first is it is a smaller body than the council of minister yes it's a correct statement next was it was mentioned in the original text of the constitution the role of the cabinet is not defined in the constitution it is based on the convention of the parliamentary government as developed in the Britain yes it's a correct statement but statement second is incorrect because ये originally कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कैबिनेट के बारे में कहीं भी दिया हुआ सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट ऑन the cabinet did not find a place in the original text of the constitution और ये किससे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था उससे ये ऐड किया गया है ओके बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इट्स साइजेस इज डिटरमाइन द प्राइम मिनिस्टर क्लासिफिकेशन इनटू 3-tier बॉडी इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस
of parliamentary government and develop in Britain. Okay, so answer is option number B, only 2 is correct, okay, which is 1 and 3 is correct and second statement is incorrect, okay. Let's come to the next question, which is with reference to time crystal, sometimes seen in news, which is related to they are crystal that generate energy perpetually. No, they break both time and space symmetry existing in the highest energy state. No, it's not a correct statement. Another one is they traditionally crystal used in laser technology. No, they oscillate between two states without losing energy. Yes, state. Option number D is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is retro sometime seen in the news. Okay, retro sometimes seen in news, which is related to associated with first genetically modified crop developed. No, it's not a correct statement. Next is cloned rhesus monkey. Option number B is the correct answer for this question, which is cloned rhesus monkey. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the cyclone Asna. Okay, cyclone Asna, which recently seen in news, which is related to first statement is there is asking about correct or statement one. It originated in Arabian Sea and made in landfall in the Kutch of coast. Kutch coast. No, it's not a correct statement because a rare. It's a rare land originating cyclone Asna formed over the Kutch coast of Gujarat. Okay, ये land originated था. And unlike typical cyclones that over warm ocean water, Asna originated as a deep depression of land in Gujarat and was poisoned to intensify into a tropical cyclone over Arabian Sea. Cyclone Asna did not make landfall on India but instead moved into the Arabian Sea and towards Oman. And cyclone affected किसको गुजरात राजस्थान एंड मध्य प्रदेश को किया था एंड एज वेल सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो. ओके, so answer statement first is incorrect. Statement second is generally tropical cyclone are more frequent in the Arabian Sea than the Bay of Bengal. No, it's not a correct statement क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट को रिवर्स किया है. जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन आर मोर फ्रीक्वेंट इन बे ऑफ बंगाल दैन द अरेबियन सी. ओके, अरेबियन सी में बहुत कम आता है किसका 4:1 के रेशियो में आता है. अगर 4 आया है बे ऑफ बंगाल में तो 1 आएगा अरेबियन सी में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, none of the above, which is neither 1 and nor 2 is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is sexually harassment at workplace violate which of the following fundamental rights of the woman. First statement, first is a right to equality under article 14. Yes, it's a correct. Right to life and liberty under article 21. Correct. Right to practice and profession under the article 19. It's also correct. So answer for this question is ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये किसका जजमेंट था 1997 में जजमेंट आया था किसका, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिफाइन किया था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जिसमें कि pronounced preventive, prohibitory and redress measures and gave directives towards the legislative mandate to the guidelines proposed sexual harassment violates the following fundamental rights, जिसमें कि आर्टिकल 14, 21 एंड 19 की बात कही गई थी. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज which of the following states have the status of special status category. तो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 11 स्टेट इसके अंदर आता है. और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रिफर्स टू, ये दिया क्यों जाता है, टू क्लासीफाई गिवन टू सर्टेन स्टेटस इन इंडिया दैट फेस डिस्टिंक्ट चैलेंजेस hindering their economic सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, तो इसके अंदर 11 स्टेट है, जिसमें कि 7 तो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वो 7 इसमें आ जाएंगे. एंड बाकी 4 कौन कौन से हैं, तो हो जाएंगे
हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना एंड सिक्किम, और एक कौन सा आ जाएगा तो उत्तराखंड। ओके, तो कितना हो गया 11। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं। सो असम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है एंड तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसमें ये सारे आ जाएंगे। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुछ क्राइटेरिया भी हैं। ओके, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी हैं, और वो क्राइटेरिया क्या है तो उसके अंदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑन बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें फैक्टर क्या है वो तो या तो एक वो हिली एरिया होना चाहिए एंड डिफिकल्ट टेरेन। नेक्स्ट इज लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग borders and neighboring countries, and economic and infrastructure backwardness and non-viable nature of the state finance। ओके, और एक गडगिल फार्मूला आया था। एज पर द गडगिल फार्मूला, स्पेशल स्टेटस is to be given to certain state because of certain intrinsic factors which have contributed to their backwardness historically। Okay, so answer is option number A. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to system of subsidiary alliance। Okay, first is Lord Wellesley was originator of the practice of subsidiary alliance in India. Is it true? No, it's not a correct statement because subsidiary alliance जो है ओरिजिनली फॉर्म्ड इंट्रोड्यूस किया था वेलेस्ली, बट इट वाज प्रोबेबली ड्यूप्लेक्स, जो ड्यूप्लेक्स थे जो कि हु फर्स्ट गेव ऑन हायर यूरोपियन ट्रूप्स to Indian rulers to fight their wars। Okay, so first statement is incorrect. Next is Satara was the first Indian kingdom to accept the subsidiary alliance by the British। No, it's not a correct statement. Satara सबसे पहले doctrine of lapse में अडॉप्ट किया था, कितना में 1948 में। ओके, 1948 में। एंड अगर हम बात करते हैं, और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही ये डिस्कस किया था, लास्ट टेस्ट में, कि कौन किया था। ओके, सो सब्सिडरी अलायंस का सबसे पहले कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा अवध। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस, सबसे पहले तो अवध किया था 1765 में। देन आफ्टर उसके बाद सबसे पहले कौन सा किया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1800 में, रूलर ऑफ मैसूर 1799 में, रूलर ऑफ तंजौर 1799, नवाब ऑफ अवध 1801, पेशवा भोसले राजा ऑफ बेरार 1803 एंड सिंधिया 1804, राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर, जयपुर, माचरी, बूंदी एंड रूलर ऑफ द भरतपुर 1818, एंड होलकर जो थे लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। लास्ट कौन थे, होलकर, और फर्स्ट कौन थे, अवध। ओके, अवध first Indian state to fall into this protection trap। Okay, let's come. So answer for this question is option number D. Neither 1 neither 2 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the parliamentary procedure। First is this procedure allows for the temporary suspension of the House's regular business to address a matter of urgent public importance। Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is it leads to a debate on the issue raised, ensuring transparency and promote governmental response। Yes, it's also correct. Next is this motion cannot be introduced in the Rajya Sabha, also correct. It significantly influenced the legislative agenda by prioritizing urgent discussion over routine proceeding। Yes, it's also correct. So ये किस चीज़ से रिलेटेड है, और यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द प्रोसीड्यूर मेंशन इन द अबव पैसेज, तो वो एडजॉर्नमेंट मोशन से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर
बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है? अ पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर थ्रू विच द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सप्रेस लास्ट ऑफ the no confidence motion in the government leading to a vote that it passed result in the government's resignation. And cut motion होता है parliamentary tool used by the MPs to oppose a specific policy or expenditure in the bond presented by the गवर्नमेंट अलाउिंग फॉर वोट ऑन द अमाउंट ऑफ रिडक्शंस आउट। एंड अगर हम कॉलिंग अटेंशन मोशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर दैट इनेबल्स MPs to call attention to urgent matters in public importance, seeking a response from the government without a formal debate or vote. Okay, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to partition of Bengal by the British in 1905. First statement is Congress session held at Calcutta 1906 under the presidencyship of Dadabhai Naoroji declared that the goal of the Indian National Congress was self-government or Swaraj. Yes, it's a correct statement. Next is the anti-partition movement was supported by the upper and middle class of Muslim. No, ये अपोज किए थे. Okay, so statement second is incorrect. So answer for this question is option number A. Only one is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. First is, और इसमें क्या, which of the following personality is being referred to the given. So first is she founded Congress Women's Wing All India Mahila Congress in 1940. वो तो कौन से हो जाएगा? सुचित्रा कृपलानी. Okay, next is she was first woman chief minister of a state in independent India. She sang Vande Mataram in the independence session of the Constituent Assembly before Nehru delivered his famous Trust with Destiny speech. Yes, it's a, so ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो वो सुचिता कृपलानी से रिलेटेड हो जाएगा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज with reference to the Union Public Service Commission, UPSC consider the following statement. First is selection by the UPSC confers the right to the post upon the candidate. No, it's not a correct statement because ये ऐसा कुछ नहीं करता. Okay, does not. So statement first is incorrect. Next is the president can limit the jurisdiction of UPSC. Correct. The government is answerable to the parliament for not accepting the UPSC recommendation. Yes, it's also correct statement. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct answer for this question. Okay. And if you're talking about the first statement, which is incorrect, the selection by the UPSC does not confer the right to the post upon the candidate. However, the government is to act fairly and without arbitrariness or malified. Yes, it's a. So answer is option number B, which is 2, 3 and correct. Let's come to the next question, which is Bugun tribe recently donate a land for the critically endangered songbird Bugun Leochila. These tribes found in Arunachal Pradesh. Okay, so answer for this question is option number B. Arunachal Pradesh is the correct answer. So what was the demand for the home rule movement? First is complete political independence. No. Free the local administration. No. Independent Act 1909 as soon as possible. No. It's right of self rule as given to the white colonies. Okay, so answer is option number D is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is the Tyler Prize
was recently seen in news. It is awarded for which of the following field? तो किससे रिलेटेड है? तो वो इन्वायरमेंटलिस्ट से रिलेटेड है, जो कि हाईएस्ट जब वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड बोला जाता है इन दिस फील्ड्स. ओके, एंड अभी प्लानिटरी बाउंड्री पियोनियर किसको दिया है? तो जोहन रॉक जोहन रॉक स्ट्रॉम को ये मिला है 2024 में. ओके, so answer is option number A is the correct. Let's come to the next question, which is with reference to the interstate council, consider the following statement. First is it is permanent body. No, it's not a permanent body, so first statement is incorrect. It's a constitutional body. Correct. Next is it is headed by the Prime Minister of India. Correct. Along with CM of all states and UT, it also consists the administrator to UTs not having legislative assembly. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Only 3 is correct. Okay, let's come to the next question, which is the constitution of a country serves several purposes. Which of the following purposes are served by the constitution in making a country stronger and more resilient? First is it lays out ideals that form the basis of the kinds of country that citizens aspire to live in. Yes, it's a correct statement. Next is it ensures that dominant group does not use its power against other less powerful group of people of group. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. Both are correct. Okay, sorry, option number C. Both are correct. Let's come to the next question, which is with reference to the precedent rule in India, state consider the following statement. Okay, first statement is the governor recommends the precedent rule under the article 356. His decision is not subject to judicial review. No, it is subject to judicial review. Okay, so first statement is incorrect. The constitution uses the expression proclamation of emergency to denote a national emergency and a precedence rule in a state. Is it true? No, it's incorrect statement, because constitution uses the expression proclamation of energy to denote a national emergency, but not the precedent rule in a state. Okay, so national emergency को करता है, ना कि precedent rule को भी. Okay, so answer for this question is option number D. None of the above is correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following article of the Indian Constitution deals with the consequences of a state's failure to comply with the directions given by the union? So statement article 365 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is consider the following pairs. Okay, first is साल्ट सत्याग्रह एंड लीडर रिलेटेड टू. तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी, मालाबार के केलप्पन एंड ओडिशा से गोपाल बंधु चौधरी. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? 1 and 3. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस mentioned in the news recently refers to a group of countries in Eastern Europe that oppose capitalism. No, it's not a correct statement. Next is new Nazi organization in Europe. Is it true? No, it's not a correct statement. Next one is network of autonomous militant Islamist group. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to the United Indian Patriotic Association. United Indian Patriotic Association. First is it was founded by C. Ramaswamy Iyer, K.K.
K. Kamraj and Veer Salingam Pantu. Is it true? No, it's not a correct statement because it was founded by the It was founded by the Sir Syed Ahmad Khan and Raja Shiv Prasad Singh of Banaras और कब हुआ था 1888 में included Muslim Organization of Upper India, the conservative Hindu atrios, atrios, aristocracy. Okay, Hindu aristocracy. So first statement is incorrect. Next is it supplemented the objective of the Indian National Congress for the constitution reform in the late 19th century. Is it true? It's not also not correct because the opposed the Indian National Congress. The group aimed to develop close ties between the Muslim communities and British Raj and foster Hindu-Muslim unity. Okay, so statement. So answer for this question is option number D. Neither one, neither two is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is with reference to modern Indian history was common between Gizubai Bandekar and Sri Aurobindo Ghosh and Tarabai Modak. Okay, so first statement is revolutionaries in Western India. No, it's not a correct statement. Establishment in English Persian colonial. No. Establishment of churches. No. Education in colonial India. Okay, so answer for this question is option number D is the correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to the rise of revolutionary activities in early 20th century in British India. First statement is Savarkar and his brother organized Mitra Mela, a secret society in 1899 which merged with the Abhinav Bharat after the Mazinisi Young Italy in 1904. Yes, it's a correct statement. Second is the earlier revolutionary extremists were against taking support from any imperial western country. No, it's not a correct statement because the in the Zimmermann's plan, also known as the German plot, was a plan to create a rebellion against the British Empire in India during World War I. The plan was organized by Jatin, who asked Rasbihari Bose to lead it. The Jugantar Party against to import German arms and ammunition through sympathizers and revolutionary abroad. Okay, so answer for this question is option number A. Only one is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the constitutional amendment procedure in India and USA. Okay, so first statement is in USA, the state legislature can initiate a bill for amending the constitution, where in India, state legislature cannot initiate a bill to amend constitution on any matters. Yes, it's a correct statement. Next is no proposal to amend the constitution requires the consent of more than half of the state in both India and USA. No, it's also incorrect statement because the major part of Indian constitution can be amended by the parliament alone, either by a special majority or by a simple majority. Only in a few cases consent of the state legislature is required, and that too, but only half of them. Okay, while in USA it is 3/4 of the states. Okay, so answer is option number A. Only one is correct answer for this question. Okay, so thank you so much guys. बाकी 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कि इसका पार्ट 2 होगा. ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर किसी भी रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे देंगे, जिसका नाम है स्टडी विथ PK Q&A. ओके, ये हो जाएगा टेलीग्राम चैनल का नेम. ओके,
सो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो और कुछ भी क्वेरी हो आप वहाँ पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।